with sustainable and climate resilience practices. So, among other sectors, agriculture is central to achieve these three goals, including inclusive growth and sustainable. So I would like to speak in the next few minutes on briefly on the five themes. First theme was on agriculture, progress and strategies. So it remains an extremely significant sector of our economy because it contributes close to a fifth of national income, and also provides livelihoods to 46% of our workforce. As mentioned earlier, unless they spend money, we don't have rural development or even for manufacturing. Their purchasing power is very important. And over the decade, agriculture field converted into habitation. So many lands converted into agriculture land, farm land to in another use. In just urbanization, you can see earlier this district habitation area such much. At presently, as a satellite data shown in the triple or 4 times. The agriculture land is day by day reduced. The productive land is day by day reduced. The requirement of population is more. The food security is crisis. Accordingly, soil management is first is required. So, Dr. Chaudhary sir told ki soil our mother. Yes, soil is our mother. Its protect is definitely required. Some extent is direct intention in the sustainability for the long term crop productivity. Accordingly, we doing as a science. One kind of a situation we have reached where we really need to liberalize the nutrition sector, and unless we do that, we are really facing difficult times. Thank you. थैंक यू साहब, आपने शायद समझ लिया कि हमारे पॉलिसी में तो कुछ ऐसी बात करी जाए। देखिए, हम और डॉक्टर पीके सिंह कलीग रहे हैं मिनिस्ट्री में। हम लोग कह सकते हैं कि हम 20 साल से ये कोशिश कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन बहरहाल अभी शायद उसका बड़ा वक्त नहीं आया है। तो डॉक्टर पीके सिंह साहब, देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में वैसे तो सब ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर के सबसे बड़े एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट के, वो आप हैं। तो सर, आप ये फरमाते आने से पहले मैंने तारुफ में ये कहा था कि एनपीके की तो बात बहुत होती है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। कभी कभी तो हम ऐसे फैसले करते हैं कि हमने ये फैसला, आप सब्सिडाइज फर्टिलाइजर के अलावा कुछ बेच ही नहीं सकते, तो कुछ इसके बारे में भी आप गाइड करें। आप वहाँ से करें, यहाँ से करें, भारत सरकार के बारे में कुछ बताएं कि वो ये जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में क्या सोचती है। आइए, तशरीफ लाइए। Thank you, sir, and thank you, Vicky, for calling me here. कुछ सुबह से आज हम लोग के राज्यों के साथ एल नीनो को लेकर चर्चा की वजह से करीब 12-13 राज्य होती है कि फिर क्या करते हैं, what kind of innovations। हम लोग कहते हैं बिल्कुल, हमारा तो बिल्कुल ये मानना है कि रेगुलेशन जो है वो हमेशा इनोवेशन के बाद आता है। इट इज नॉट कमिंग बिफोर इनोवेशन। तो किसी को इनोवेशन करने से रेगुलेशन नहीं रोकता है। हमको तो जो भी इनोवेशन होके आया है मार्केट में, उसकी क्वालिटी को, उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के बारे में तो मैं एक लाइन में बोलूँगा। जीएसटी आने से पहले जो बैंक्स थे, इंश्योरेंस कंपनीज थी, वो सिर्फ सर्विसेज को रजिस्टर करते थे एक जगह, भारत सरकार में। अब हर बैंक को, हर स्टेट में, हर इंश्योरेंस कंपनी को हर स्टेट में जीएसटी रजिस्टर करना है। बहरहाल हम एक फेडरल कंट्री हैं, तो फेडरलिज्म की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन मैं ये एश्योर कर सकता हूँ, अब तो 10 साल हो गए मुझे, कि रेगुलेटरी बर्डन है बहुत ज़्यादा बिजनेसेस पे। और एक वजह जो हमारे बड़े बड़े लोग दुबई और सिंगापुर और कहाँ शिफ्ट होते हैं, एक किताब लिखी है संजय बारोन ने, क्या एक्सेशन ऑफ द रिच किताब लिखी है वो। एनीवे, जब ये कोविड आया था तो बहुत कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हुई, क्योंकि डॉक्टरों से मिलना मुमकिन नहीं होता था, तो सब व्हाट्सएप पे उनसे एडवाइस लेते थे। तो हर एक शख्स ने, यहाँ भी आप लोगों में से
शायद कुछ लोग लेते होंगे, सोने से पहले जिंक लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ हमारे पास डॉक्टर सुमित्रा दास हैं जो इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर दास तो वो बताएंगे कि वो तो ह्यूमन हेल्थ के लिए था, सॉइल हेल्थ के लिए जिंक की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसके बारे में साहब आप कुछ जरा ब्रीफली फरमाइए कि क्या सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए जो किसानों को बताया गया कि उनकी जमीन में कितना जिंक है, उसका कुछ फर्क पड़ा? किस स्टेट में ज्यादा किसानों ने उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया? धन्यवाद सर। Respected Chairman and Executive Commissioner to PK Singh, my fellow colleagues, fellow panelists, and all the friends and colleagues from industry and other sectors. At the outset, we'd like to thank the organizer, Vicky, for giving this opportunity. So, जैसा सुबह हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, it's a very pertinent question. As you know, zinc is essential nutrient not for only crops but as well as it is equally essential In the world, we are based out of the United States. We produce phosphates and potash, and we produce phosphates out of the United States and potash from Canada. And we supply across India, and for many years we were one of the largest suppliers of phosphates into India. But we also have our own distribution business in India. We've been distributing for the last 25 years, both DAP and MOP in India. And Mosaic is also, has grown its biosciences business, which is the biosimilants and the biologicals, particularly a lot of research in the field of biologicals. And we have launched those products in India as well. So, so you asked a very pertinent question of what's happening here. You actually differentiated the horticulture versus the traditional crops and how they have progressed so well, and how they are, you find that the private partnership there was very, very high. So there are some fundamental facts which actually works in the favor of horticultural crops. Especially as the crops were more cash crops and the farmers were willing to invest and do research in terms of what is the right nutrient that is needed for his crop. We found that when we are doing extension work, we operate across 20 states in the country. We find that, especially in the horticultural crops, the farmers are willing to test what his soil condition is, what are the nutrients in the soil, and then he is applying nutrients as per that. Then he's saying that how do I improve the efficiency of the nutrients that I'm applying? He's willing to apply biostimulants and even biologicals, and that has made a huge difference. And you also find a lot of these companies, the companies like us, we're focusing on those farmers who are more conscious with respect to the soil and how he can improve his yield. He's willing to invest, he's also finding returns in that. Right? And that is kind of what is reflected all across the country. And this is kind of, I would say, is a low-hanging fruit. But I think the country as a whole is a huge potential where, one of the fundamental things that we think, Dr. Meena talked about it, about the मेरी गल सुनो उत्थे खड़े हो करना हो ना फिर आए सारे देखो सारे बह लेंगे accordingly proper the land use data or soil property, we do accordingly plan this crop is a sustainability. Some of the area not suitable particular the rice crop, but they are taken the farmer. Some of the accordingly this soil data is support to what crop suitable particular that crop. Which extent irrigation facility you can use that extent.